which handle all the administrative duties for the system. Uh, that system or computer is called a control node or controller, or sometimes we can also call this as a dispatcher. Nodes are running special computing networks, and that is middleware. So node should have also installed on them the middleware operating systems. Okay, whenever you hear about the middleware, this is middleware operating system. Okay, so an example of middleware operating system is Java virtual machine. Okay, by installing that middleware, you can run your applications distributively distributedly on any operating system or hardware. Okay, yeah. Middleware is the workhorse of a grid computing systems. Okay, uh, and this currently grid computing system have lack of standards. Okay, therefore we need to have a middleware operating system. So control node functioning is scheduling or prioritizing a task, or monitoring the system's overall performance and quality, resource allocation. Okay, if there are like three computing resources located at US, China, and Pakistan, so would it be better if we have a task and we send it to US server, or it's better to process it locally? Yes, locally. Okay, so we usually assign the jobs where resources are located. Okay, and preferably if they are located at close vicinity. Okay, because it saves time and bandwidth. So grid middleware function is uh, whenever there are a number of tasks in the queue, these tasks are assigned, as I told you, where the resources are located. Okay, and preferably with the point of view of having good performance. And of course, communicating between different operating systems and hardware is also a function of this middleware. Okay. These are some of the applications, okay, of distributed grid systems, okay. So what this is a very large project, and it require a large amount of processing of received from a signal from uh, different sources. For example, different planets, different stars. So you know the these stars and planets have their signature of light, and we can calculate that how far a star is by measuring that how much time it needs to reach the light to the Earth. Anyway, SETI project is to analyze the data gathered by radio telescopes. Search of evidence of intelligent alien. Okay. So what is this fact is all about? That what kind of proof we can get that can kind of prove or indirectly claim that yes, there are some intelligent species living out there somewhere, right? So maybe they send some message, okay, which makes sense that this is logical, and the things in their perspective are coded in a way that there should be some intelligence behind, right? So this is one of the examples. There's far too much information for a single computer to analyze effectively and efficiently. Folding at the home project is a Stanford University project.
by the chemistry department, in which what we do is protein takes certain shapes. Scientists believe that protein misfolding could be the cause of disease. Okay, so this is one of the way to search for a solution of a problem. Okay, the um, cancer are being studied by using some distributed computing such as grid computing. Okay, it has a large amount of information. For example, if there are thousands and millions of genes in a body that are related to the cancer, for example, so we have to study all these, and then we have to compare it with some healthy gene sequence. If there is some anomaly, so we are trying to relate it with some disease. Okay, right? Makes sense, right? Okay. So this is a kind of a hypothesis that we have to prove that if there is some misfolding in a gene sequence, so it could be the cause of a, let's say, disease X. Okay, so if that is proven and some disease is related to certain kind of gene, so it could be prevented, right, by fixing the genes sequence, maybe by some microbial or some um, kind of micro robots that can fix these kind of things. Anyways, so in a grid computing system, this is a collection of systems that work together and can perform a task such as that can be performed on a single computer. Underlying hardware consists of collection of similar pieces. They can be, but in this case, let's say these are the pieces having similar hardware connected with high-speed network. Each node run same operating system. Okay, we are supposing this. Uh, yes. So last time we studied two kind of distributed system, and one is a grid computing system, and the other one is this cluster computing system. In grid computing, operating system can be same or different. Okay, but in case of computing, they must be same. So by standard or by law or by convention, they should have operating system like such as Linux. Each node run the same operating system. Definition of a cluster is extended further. So what kind of clusters are there? There are many types of, but let's consider these two type of clusters. Okay. So it depends upon our requirement. We want high availability, or do we want load balancing? Okay. So have a high availability cluster and load balancing cluster. Okay. So what is the feature in this architecture that make this high availability? So can you point parallel? Okay. Uh, yes. But what makes the services more available? He said there are parallelism between what kind of node is here in parallel. Yes. Okay. Okay. One is LAN. Okay. You are talking about this. Okay. What is another component? Okay. So anyone? Maybe from online? Online only. Okay. There are 9, 12 person. Okay. So there are two servers. Okay. Because for any service you have to go to some server. So if server is unavailable, so what we are gonna do?
Okay, we in this case we want to create another logical server. Okay, that if server 1 is 2 is not available, then these requests can be forwarded to this server. Okay, you can see that this LAN is also connected with both of the servers, and this LAN 2 is also connected with both of the uh, servers. Okay, if any of these server fails, or even a LAN fails, okay, so there is also fully connected network available. Okay, so this yes, these are being done in parallel. So how about Google, Facebook, and YouTube? Are these queries are being handled parallel or in serial? Parallel, yes. Who said? Okay. Intuitively, they should be parallel, but are they or are not? There are millions of queries being sent to Google, YouTube, and Facebook, like in a minute, for example. And yes, they should be like. Uh, it's very intuitive that these queries are at least being sent in parallel. Okay, so it is highly possible that in 1 second there are thousands of queries. So are they being handled in parallel or serial? Yes, your thought. Okay, it doesn't need to be correct. Okay, but discussion is possible. Sorry. Okay, your answer is there are some room for parallel queries and some serial. Okay, you mean that queries are parallel and they are being handled in serial? Yeah, yeah, kind of you are there almost. Um, so if there are like thousands of user are querying some server, so grid computing we are talking about, right? It consists of millions of computers um, whose resources are available to use. Okay, you know that in P2P sharing or computing, you also allocate your computer resources. Actually, you commit your computer resources also to the other servers. Okay, so your computer is part of the grid, right? So also in case of these things, Google have their own servers, their own computers, right? Millions of computers and like supercomputers. So they can handle queries in parallel. Okay. So your queries are being sent to their servers in parallel, and they are being handled also, being processed in parallel. Okay. So this is the one of the biggest advantage of cluster computing or grid computing for this case. Okay, so this is load balancer. Okay, so what is the feature over here which is doing the load balancing? Which is what is the component name? Right? Yes, queries are being sent or given to the servers. Okay, so in this case, servers load should be balanced, right? How we are doing this over here? Are there multiple servers? Yes. Division mean distribution of load, right? Okay. So how we are doing this over here? There are multiple clients like M clients, okay, in this case. So they are sending their jobs over the internet, which is connecting you to some server like YouTube server,
Facebook server or Google server. Okay, so where is the load balancing? बिल्कुल. Yes, this is being done, but how we are doing this over here? You are right. So you can see that the internet gives these queries, forward these queries to some master server, okay? And these servers, let's say they are located in different countries, okay? So then the relevant queries are sent to their respective servers for the further processing, okay? In this way, this server is performing the load balancing because it is connected to server 1, 2, and n, okay? So you can see that if there are millions of uh, like clients, then there are also several or hundreds of servers that are located in different countries, for example, okay? So this architecture shows you that how the load balancing is performed, okay? The purpose to discuss these two architecture is that if we see these architecture, we should understand, and by logic, we should be able to draw them on paper, okay? There is no need for cramming these figures if you understand these figures, okay? You can make another figure, right, in which there are 3 servers, totally fine, okay? But the purpose is that they should be defining this high availability cluster, okay? They should be reflecting this the purpose of this uh, high availability cluster over here, okay? So there can be multiple, there can be like 3 LANs and connected to 2 servers. Totally fine. It is up to your design, okay? What reflect your needs. Okay. Hmm. Yeah, it's kind of similar things, but over here we are supposing that if one server fails, o- in the other scenario we are not supposing that, okay? We are just uh, let's say these two are in US, okay? Then if one server fails, so this is high availability. That second is available. But in the second figure, in this we are supposing that in one country there is one server, and we are just load balancing. Okay. Yes, you can do also high availability function over here, okay, by installing 2 server in a country. So you know the difference right now, right? You understand? हम्म. अच्छा. अच्छा आंसर है आपका. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हाँ. जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसके अंदर आपने रोबन हुड राउंड रोबन टेक्निक पढ़ी होगी ना, ठीक है? वो जैसा आप कह रहे हैं ना, वो जैसे कोई आती है ना, तो वो इसको उस उन क्यूरीज को ऐसे डिवाइड कर देता है रैंडमली, ठीक है, जो भी टास्क हैं. अगर रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं तो रिसोर्सेज को जो है ना वो एक रैंडमली या एक राउंड रोबन फैशन में वो उसको करता है, ठीक है? लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो कि मेक श्योर करती हैं कि जो सर्वर पास है उसको क्वेरी दी जाए, ठीक है? तो राउंड रॉबिन के अंदर ये चीज़ फीचर नहीं है. वो कहता है कि जो क्वेरी क्वेरी आ रही है सर्वर 1 को दे दो, फिर सर्वर 2 को दे दो, सर्वर 3 को दे दो, ठीक है? लेकिन जो ऐसी क्वेरीज हैं प्रायोरिटी बेस्ड या एलोकेशन बेस्ड या लोकेलिटी बेस्ड, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जो कंप्यूटिंग पावर आपको लोकली अवेलेबल है जहाँ से क्वेरी जनरेट हुई है, तो वो क्वेरी उस सर्वर को साइन की जाए, ठीक है?
तो यू आर राइट, दिस डिपेंड्स अपॉन योर क्राइटेरिया कि जी वो पहले 2 सर्वर को दे दो, फिर तीसरे सर्वर, चौथे पांचवे को दे दो, या क्यूरीज जैसे आ रही हैं 1 to 5 ये सर्वर को दे दो, 6 to 10 इस सर्वर को दे दो, ठीक है। तो ये आगे फर्दर हमारी होती है चॉइस होती है कि हम लोग अपना एक क्लस्टर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, हमारी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्लाइंट कहता है कि वो हाईली अवेलेबल भी हो और वो लोड बैलेंसिंग भी उसके अंदर हो रही हो, तो फिर आप उसको देखें कि हमें दोनों फीचर उसके अंदर लाने होंगे, ठीक है। तो फिर कास्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमें इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया, यू कैन ड्रॉ दिस राइट इफ़ यू आर बीइंग आस्क्ड। इवन मैं ये फिगर बना दूं और ये चीज़ें इसमें से गायब कर दूं, डब्बे बना दूं, आई आस्क यू टू लेबल इट फॉर एग्जांपल, ओके। So this is more easy for you. You don't have to draw the figure, right? So I am giving you hints, okay? That what kind of question or quiz you can expect from me. Okay. I just want to you to make sure that you understand the concepts. Okay. Maybe I just ask you that this label, that if this is load balancer or if this is HAC, right? So these are the different kind of just to know that you understand the concept, okay. So this is one example that how physically these clusters are arranged, okay. So this is a cluster of nodes, and these are the nodes how they are placed in. So you can see that they are connected through high speed LAN, okay, in this case. अच्छा, जो होता है ना ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है, इसमें कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, दे आर यूजुअली कनेक्टेड थ्रू बस एंड लो स्पीड नेटवर्क. Network is always actually the low speed as compared to the LAN, okay, or bus. And in cluster are even connected through the fiber optics, and usually to the high speed. Uh, so you also take this thing in your perspective, okay, that in cluster system the computers are very close, maybe at the LAN level, okay, maybe at the campus level, okay. So clusters are usually uh, located at close proximity, and in case of grid computing it is distributed over the internet, like a geographical area. But this, which one? Yeah, they are connected by bus or internet, okay. Right. What? Let's say we have for NUST we have 13 campuses, okay. Mostly are located here in this H12 sector, okay. And how about the other campuses? For them we have to connect them using some internet, okay, virtually. They should be connected. So I'm talking about grid system, okay. You want to ask about what is grid? Like if you want to build a high high computing system, then you have to connect many computers, okay. Then you call this as a cluster of smaller computers, right? Okay. Then we have distributed information systems, okay. What were the two previous systems? Yes. Uh, yes, grid computing. Okay. And then we have distributed information systems, okay. Distributed grid systems, distributed cluster systems, and distributed information system, okay. So let's talk about this a little bit. Typical system includes a database,
Integration of such system is quite difficult. Client can wrap a number of requests into single request and have it executed as distributed transaction. Okay. Interoperability is a painful process. Okay, we will see about this. Transaction processing system is one example, and enterprise application integration is another example, reflecting the distributed information systems. Okay, can you give me an example of transaction processing system in which a transaction is wrapped in uh, multiple transactions are wrapped in single transaction, and they are querying through the different databases. Uh-huh. Transaction mean there should be different type of transaction they are being sent to different databases. So what kind of transaction you can give me example of? Yes, this could be because in international transaction, uh, you have to make sure many things like your charges are being deducted properly as standard according to the government rules. Okay, and then there are international charges, and there are exchange rate charges or something like that, right? So these all things have to make sure for this single transaction that you are just sending money from your account to another account of your friend overseas. Okay, so for that, this transaction have to go through multiple databases. Okay. Okay. Um, so you can see that there is a nested transaction. Okay, in which there is a sub transaction one and sub transaction two, and they are in this case it is going through airline database and hotel management database. Okay. So this is an example of distributed information system in which there is an application of distributed information system in transaction processing system. Okay. So there are two independent queries into different databases. Okay. So if I ask you that give me an example by drawing some figure, give me example of transaction processing system. Okay. So you can easily give this example. Okay. So this is sub transaction. You can call this transaction one, two, three. Okay, this is equally fine. So I don't just like looking for just pet words that you have to use them. So you can like do this. If you give me some definition that is not from the lectures, but you have heard from somewhere or read from the internet, I can accept this definition. Okay, even this is not in the lectures, but you have to prove this. That sir, this is the definition. I have remembered this definition from this. This is totally valid. So why not, right? So I will accept this. So don't worry about this. But concept should be clear and definition should be clear. Okay. So we have also an enterprise application integration. Okay, this is also distributed information system challenge. Okay, so in this we have a publish subscribe model. If someone needs some service, they will subscribe to that service. Okay, and then they publish that service that we are having this kind of a service, and if someone needs, they can request us. Okay, so there are client application number one, two, three, and so on. Then there is communication middleware, okay, and the server side application one, two, three, four. And this guy over here, this is doing the like the difficult task of uh, allocating a client request to some certain server. Okay, what these? No, it's not physical. This is just like kind of a operating system. Okay.
We are also almost finished. Uh, Distributed pervasive computing. Okay, this is third type. In what? In distributed computing systems. Okay. So mobile and embedded computing devices are one of why we are saying this pervasive computing. What is special over in this figure that we label it as pervasive computing? Do we have single type of device over here or different types of devices? Different type of devices. Okay. So if you have a cell phone, if you have a refrigerator, if you have a washing machine, that can be uh, coded or automated. If this has a chip, then you can connect this with the uh, distributed pervasive computing system. Okay. Not only we have a different type of devices, we have a different type of networks also in this case. Okay. Uh, so you can control the lights of your home. You can control the environment of your home, like temperature and air, ventilation, or humidity. Okay. Instability is the default behavior. Okay. What is instability? Um Although you want 25 centigrade temperature in your room, but outside temperature is different. If you want certain flow of air, but outside is different. Okay. So instability is there. So if it's summer, then your AC will run faster. Okay, will use more power to give you 25 centigrade. Okay, the room temperature. But if it's like winter, so it has to work lesser. Okay, so this kind of things we have to consider. Plus, some devices fails. Okay, then you have to know that this device is failed. Being small, battery operated, having wireless connections. Okay, so these three things are like unstable. That a small battery can just drain very fast. Okay, for example, in days. And these devices are small. It means that they have to incorporate all the computing resources, like also battery, inside a small package. Okay. So are the wireless connection more unstable as compared to the wired connections? Okay. So any example? Like instability in term of speed, availability, quality, or security. Uh-huh. Mhm. ओके, गुड एग्जांपल। सो आपने ट्राई किया इसको? हाँ, अच्छा। ओके, राइट। आप लोगों ने 4G नेटवर्क घर में रन किया हुआ है? मतलब कि इंस्टेड ऑफ सम पीपल आर रिप्लेसिंग देयर वाईफाई विद 4G नेटवर्क। इज इट ट्रू, राइट? क्योंकि मैंने ट्राई किया है। 850 में ना वो मिलता है टेलीनॉर का 4G 50 GB का। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास घर में सिग्नल अच्छे आते हैं टेलीनॉर के या इवन यूफोन के, so जो मेरा एक्सपीरियंस है, इट इज़ quality wise is not bad. I'm not saying that it's better than Wi-Fi, but it does all the things that you need. Okay, and the price is also reasonable. But in case of Wi-Fi, you can share it with if you have multiple portions in your house, so you can share it. Then it is more viable. Okay, well, so lack of administrative control. So if we have these kind of pervasive computing in our homes, okay, so do we need administrators, right?
So we don't have administrators if we are doing this at home. Okay, so आपको पता है कि एक दफ़ा गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, ये जो ये शॉप वाले नहीं होते इस तरह के लोग, ठीक है, तो उन्होंने कहा हमें अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, इस वजह से वो उसकी काफ़ी मुखालफत कर रहे थे, ठीक है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल कि आपको स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं, देन यू हैव टू नो देम, राइट। सो दिस थिंग is also lacking an administrative control. Okay, so feature according to this paper, okay, features of pervasive applications are embrace contextual changes. अच्छा, ये contextual changes क्या होते हैं? कॉन्टेक्स्ट पे एम्फोसाइज किया जा रहा है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि हर जो होता है ना, एक एप्लीकेशन होती है या कोई सिक्योरिटी का ब्रीच होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं हमेशा उस नेटवर्क के अंदर, जो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो उसके सिग्नेचर है ना, वो बताता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कौन सा अटैक है, उसके सिग्नेचर बताएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन के वो अटैक जो है वो मल्टीपल मशीन्स पे है, वो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग वाले कंप्यूटर हैं उन पे है, या वो स्पेसिफिकली जो है सर्वर को जो है वो जो है ओवरबर्डन करना चाहता है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो इसको समझिए ये केस है, ठीक है, कि अगर आपकी एक गाड़ी की रिपेयर की शॉप है, तो आप देखते हो कि उसको कैसे आपने जो है फिक्स करना है गाड़ी को, तो उसके लिए आप एक सर्टेन केसेस बनाते हो कि अगर ये वाला केस है तो हेडलाइट ख़राब है, अगर ये वाला केस है तो बैटरी डेड है, अगर ये वाला केस है तो प्रॉपर्ली फ्यूल फिनिश्ड है, ठीक है। तो ये इसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें, हर जो बंदा यहाँ पे मशीन हुक अप है ना इस नेटवर्क के इंटरनेट के साथ, तो देखें इन सब का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब उनका इंटरनेट को एक्सेस करने का पर्पस, ठीक है, और उनकी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिमांड जो वो चाहते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, इसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं जो हैं परवेसिव कंप्यूटिंग के। फर्स्ट क्या है, वी हैव टू एम्ब्रेस द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यूज़र डिफरेंट हैं, एक मोबाइल के साथ हो सकता है, एक जो है एक फ्रिज इंटरनेट से टॉक कर रही होती है, ठीक है, कि ये चीज़ अगर आइटम फिनिश्ड है तो इट शुड बी रिपोर्टेड। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। एनकरेज एड होक कंपोजिशन। एड होक का क्या मतलब होता है? एड होक होता है जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, तब इंटरनेट से कनेक्ट करो, ठीक है, यानी नीड बेसिस। तो अगर आपको क्या चाहिए कि एक वेदर एप्लीकेशन है, ठीक है, इट नीड टू कनेक्ट विद द इंटरनेट आफ्टर एवरी 1 आवर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 1 आवर के बाद अपडेट होती है, ये एक एड होक एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल। तो एड होक कंपोजिशन जो है ये एक चैलेंज इसका है, ठीक है, तो वी हैव टू कंसिडर दिस एज डिजाइनर ऑफ परवेसिव कंप्यूटिंग। रिकग्नाइज शेयरिंग एज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अगर आप कोई रिसोर्सेज इंटरनेट पे शेयर करना चाहते हो, ठीक है, जो कि आप अवेलेबल करना चाहते हो, यानी टू हैव टू इनेबल द शेयरिंग बाय डिफ़ॉल्ट योरसेल्फ, अदरवाइज रिसोर्सेज विल नॉट वुड नॉट बी शेयर्ड। ओके, तो इसमें ये प्रेज्यूम किया जाता है कि हर एक ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने रिसोर्सेज शेयरिंग जो है इनेबल की हुई है, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट लाइक इम्पोर्टेंट। Okay, I think this is okay. Okay, okay. डिस्ट्रीब्यूटेड परवेसिव कंप्यूटिंग की जो है ये एक और एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड होम सिस्टम्स, ठीक है। तो ये आप फेमिलियर हैं इस तरह के सिस्टम से? सुना हुआ है, होम ऑटोमेशन का सुना हुआ है? हाँ, तो ये होम ऑटोमेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यस, okay, so this is very popular type of pervasive computing, comprised of TV, audio, video equipment, game devices, PDAs, as a single system. Okay, सिंगल सिस्टम का क्या मतलब है? आपको जो सर्वर है ना वो एज ए सिंगल क्लाइंट कंसिडर कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी टाइप की हैं, ऑडियो, वीडियो,
एंड जो है पीडीएस हो सकती हैं डिवाइसेस, और गेमिंग सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज वर्क एज ए सिंगल सिस्टम। चैलेंजेस क्या हैं? सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, सेल्फ मैनेजिंग, एंड archiving is also important through the UPnP standards obtain IP addresses, okay। IP एड्रेस जो है कोई डिवाइस हो उसको ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाता है, ठीक है, राइट। तो उसमें प्रोटोकॉल होता है कि जी अच्छा आप सेल्फ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसके तहत जो है आपको आईएसपी है वो एक जो है वो दे देता है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो मॉडर्न हाउसेस हैं। आपने सुना होगा कि स्मार्ट सिटीज़ एक इधर भी है, पता नहीं वो कितनी हद तक स्मार्ट है या होगी, लेकिन दीज इन स्मार्ट सिटीज़ देयर आर स्मार्ट होम्स, ओके। अच्छा, ये जो है ये किस नेटवर्क की एग्जांपल है, ठीक है। नेटवर्क भी तो काफ़ी टाइप के होते हैं ना, वायरलेस नेटवर्क है, 2G नेटवर्क है, 3G नेटवर्क है, और 5G नेटवर्क है, एडहोक नेटवर्क्स हैं, तो आईपी नेटवर्क्स भी हैं, ठीक है, जैसे हम लैन कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम है? जी, बिल्कुल। तो मैं यही आपसे कहलवाना चाहता था, ठीक है, बॉडी एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हेल्थ मॉनिटरिंग जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें एक जो बंदा है, फॉर एग्जांपल अगर ही इज़ वेरी सेंसिटिव, तो उसके लिए जो है उसका टिल्ट सेंटर सेंसर है, ईसीजी सेंसर है, पीडीए है, जिसके ऊपर उसकी सारी जो है सेंसर लगे हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ मॉनिटर की जा रही हैं, ठीक है। और मोशन सेंसर है, बॉडी एरिया नेटवर्क है। अच्छा, इस चीज़ को कहते हैं बॉडी एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या होता है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली exactly। वायर्स नहीं होती, और किसी ने कहा था कि वायरलेस होता है, ठीक है, तो वो वायरलेस सिस्टम होता है, ठीक है, ओके। मिनिमल हिंड्रेंस टू ए पर्सन, ठीक है। अब ये नहीं है कि हर जो डिवाइस है वो डिफरेंट चार्जर के थ्रू सिस्टम में लगाई गई है, और इस तरह से पांच छह जो हैं डिवाइसेस हैं, इस तरह से वो इमोबाइल हो जाता है ना बंदा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बॉडी एरिया नेटवर्क होता है जो कि वायरलेस होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि लेट्स से यहाँ पे तो मोशन सेंसर इसके ना रिस्ट पे लगाया गया है, ठीक है, या समझ लेंगे कि ये स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर मोशन मोशन सेंसर है, ठीक है। तो आप कोई ऐसी एप्लीकेशंस बता सकते हैं कि सिर्फ उस मोशन सेंसिंग जो डिवाइस है उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं यूजफुल? कि एक बंदा है, लेट्स से कि 10 बंदे हैं डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट एज के, डिफरेंट हाइट के, और डिफरेंट हैबिट्स के, फॉर एग्जांपल। तो हम उनसे किस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं दैट कुड बी यूजफुल फॉर हेल्थ सिस्टम और समथिंग? नहीं, सिर्फ मोशन सेंसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी, कितनी देर? अच्छा, ठीक है, और? अच्छा, नहीं आप उधर जा नहीं रहे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या एक बीमार पर्सन जो होता है, सिक पर्सन, उसकी गेट जो है या चाल उसकी जो है डिफरेंट हो सकती है जब वो बीमार हो? जी, स्लो चल सकता है, ठीक है। जी, हाँ, पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है उसका फुट हर्ट हो गया हो, ठीक है। लेकिन क्या उसका हम पता चला सकते हैं? सिग्नेचर क्या उसके अंदर कोई मोशन के अंदर खास होगा ना, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ हमने 10 लोगों को ऑब्जर्व किया, उनके सिग्नेचर, हाँ, पैटर्न जो था उनका ऑलमोस्ट सिमिलर था, तो हम कह सकते हैं नहीं ये डिजीज नहीं है, ये इसका फुट हर्ट हुआ है, ठीक है, ही लिम्पिंग लिम्पिंग बिकॉज ऑफ हर्ट फुट, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, एक हेल्दी पर्सन के गेट के अंदर और एक सिक पर्सन की गेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एक बंदा हेल्दी है, ठीक है, एक बंदा सिक है फॉर एग्जांपल, तो उनकी गेट में, उन चाल में, उनके चलने में डिफरेंस होगा। हाँ। हाँ, ये भी कि वो कितना ज्यादा स्टॉप करता है चलते हुए, लेट्स से फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, क्या वो एक गो में चले जाता है आराम से, एक कांस्टेंट गेट के साथ, ठीक है, या वो रुकता है, स्टे करता है, बैठता है, फिर जाता है, ठीक है। तो अच्छा, ये आप भी ठीक कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि हो, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसे वो एल्गोरिदम बना लेते हैं, हम कहते हैं कि 90% जो एक्यूरेसी के साथ हम बता सकते हैं इसको ये कोई डिजीज है। फिर उसके अंदर भी हम सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज बता सकते हैं कि जी मे बी इसको जो है लंग्स का मसला है, मे बी इसको जो है जॉइंट्स का मसला है, ठीक है। वो हम 100% एक्यूरेसी से नहीं कह सकते, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा होता है कि जी हम बता दें, ठीक है, बजाय कि उसके सारे टेस्ट लेने के, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जी वी आर सेइंग विद 70% एक्यूरेसी दैट ही हैज सम लंग्स डिजीज, फर्दर टेस्ट आर रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये फर्स्ट एडवाइस सिस्टम इस तरह का हो सकता है। तो ये जो गेट के मोशन सेंसर के थ्रू जो है डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस आजकल हैं, बड़ी ये परवेसिव हैं और बहुत ज़्यादा इन पे काम हो रहा है, ठीक है। तो गेट जो है दिस इज इवन हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट की आप डिफरेंट की बात कर रहे थे, तो हार्ट बीट स्लो है, फास्ट है, एकदम से फास्ट हो गई है, तो इसकी भी कुछ एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर इनको कंबाइन कर दें कि जी बंदा बैठा है, उससे पहले देखा हमने हार्ट बीट उसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, मे बी वो टायर्ड हो गया और फिर बैठ गया। तो आप देखें कि इन जो है सेंसस की वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसस की वजह से हम लोग रिसर्च के अंदर काफ़ी आगे चले जाते हैं, ठीक है, और इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की जा सकती है। तो ये खैर वो ये होता है बाज़ दफ़ा ना, इंट्यूशन डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है, तो टू गेट टूवर्ड राइट थिंग। अगर देखें इस तरह के जो हार्ट बीट वाला है, स्लीप मॉनिटरिंग के हैं, मोशन के हैं, ये तो आपकी वॉचेस में भी अवेलेबल हैं, ये हर फ़ोन के अंदर इस तरह के होते हैं सेंसर्स, ठीक है।